So till now we have covered variable, scope, and in this video we will cover hosting. Okay. In the hosting we have hosting and the temporal dead zone. So we will see in this video. So let's start with a simple question. I want you to comment out what will be the output of this file. Basically, when we run h1 file, which is this file, what will be the output? What will it console? I just want you to comment out fast and be interactive, bro. We'll run karte and let's see what we get here. So we are getting here undefined and let's paste here. I hope you are also getting this and yeah, you also comment that one. And if we run this h2, so let's see what we get here and yeah, comment out fast. So here if you see we are getting a error cannot access a before initialization. Okay, let's paste here. So this one we are getting error and let's see what we get here. And again I want you to comment out fast. So here we are getting as we expected, hello kitties, as you are, sorry, this is the thing. So here we are getting, okay, there is the three different thing and each one we are getting different output. Okay, let's understand with this. So this is hosting basically. Okay, and what is hosting? Not hosting. Here I already have written something and पहले पढ़ते हैं and after that we will understand what exactly it is. And don't worry, I will show you on the browser also how it's work behind the scene or behind the site or whatever you call it. Okay, so it is the process of registered variable and the function declaration during the memory creation phase. So when the okay, this is related to education of executing when the code is executed. So this is related to that one. And don't worry, we will cover in the module 5 and because it is little bit deep. So in this video, we will just cover just little. Okay. And we will cover in deep in later video in the module 5. So basically, this is the process of registering variable and the function regulation during the memory creation phase before executing the code. It does not move the code physically. Instead, it allocate memory for the declaration. Okay, and don't worry, I will explain. And what is initialized with undefined as we get here. Let and const remain in the temporal dead zone. Okay, what is temporal dead zone? We will see. Function declaration is fully hosted and function declaration is fully hosted. So as we get here, fully output as we expected here. So let's understand with this. Okay. In the simple language, so what is hosting is, so this is the your file. What is hosting is basically whatever in the file, put it at the top before executing this file. चलने से पहले ये सारी कोड को ऊपर कर दो. ठीक है, बेसिक मीनिंग यही है होस्टिंग का. अब एक्चुअल में होता क्या है वो समझो. जब कोई फाइल रन होता है, ओके, व्हेन एनी फाइल रन्स, सो देयर इज टू थिंग हैपन. दो फेज में होता है. ठीक है, फेज वन में क्या होता है? ओके, लेट्स क्लियर दिस एंड मेक मी अ clean drawing. Okay, so this is the basic diagram of suppose this is a JS file and here is code one is like that. Okay, so what happened in page one? Let's look at the whole file and see here. Here is var, here is let, here is const, here is the function, here is the arrow function, and anything like class and anything. Okay, leave it at it, and we will discuss only these things, and in the later we will see. Okay, so what happened here in the phase one? This is the memory. Okay,
It's see here, this is and that it encoder with first it encoder with word, and it allocate a memory to word, and it right here undefined. So word में क्या हुआ, when it see a word, it allocate a memory and with a value of undefined, memory भी दिया and value भी. Okay, then it encounter with let. So it just create a memory block, nothing else. ये खाली है, this is empty, there is nothing. Then it encoded with const, so it behave like let. ये भी खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा. Okay, then it that encounter with function. So function में क्या होता है, it just create a memory and whole function is in this memory. पूरी की पूरी फंक्शन को इसने क्या किया, उठा के इस मेमोरी ब्लॉक में डाल दिया. तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे कॉल किया था एंड यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट हमें मिल गया. बिफोर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने से पहले हमने कॉल कर दिया था, तो हमें आउटपुट मिल गया. तो वो कैसे हुआ, इधर ही हुआ, पहले पेज में ही पूरी की पूरी फंक्शन को इसने मेमोरी ब्लॉक में डाल दिया था. सो ऐसा होता है. एंड एडो फंक्शन, एडो फंक्शन में क्या होता है, एडो फंक्शन होता कैसे है वो देखते हैं पहले. एडो फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं या तो लेट या फिर सॉरी वर्ड या फिर लेट या फिर कॉन्स्ट ऐसे लिखते हैं. देन फंक्शन नेम, सपोज यहाँ पे ए है, देन फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं. इफ यू सी हियर, वी यूज दिस वन कीवर्ड, देख रहे हो, वर्ड लेट कॉन्स्ट, ये कीवर्ड को यूज कर रहे हैं हम लोग. एंड ये कीवर्ड जैसे आया तो इस बिहेवियर को रिपीट करेगा. जस्ट यूज दिस. अगर हमने वर्ड यूज किया तो वर्ड के साथ क्या होगा. ओके, व्हाट हैपन दिस, लेट्स मूव हियर अगेन. So, so what happened with war undefined, and इसके साथ क्या होगा, बस एक ये लग जाएगा फंक्शन. अगर वार अनडिफाइंड को हम ऐसे कॉल करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा. सो सेम थिंग हैपन. ओके, एंड वी विल सी दैट. एंड let and const. Okay, so same thing, there is nothing and we calls nothing, तो error ही आएगा, reference error. Okay, we get here reference error. So let's see in the browser. Browser, and yes, have you subscribe किया आपने, जल्दी कर लो भाई. Okay, let's open this browser, basically DevTools, and यहाँ आपको स्कोप पे आना, एंड आई रिक्वायर मेरे साथ कर लो तो जल्दी सीखोगे आप लोग. ठीक है, अच्छे से समझ में और जल्दी आ जाएगा. ठीक है, so now if you see, we are getting console here, hello is undefined 10 again. Okay, so what we have to do, we have to put the some breakpoints. So just click here, and we just want to see what will happen. So right now there is no scope, no call stack, nothing else. Okay, so just we have put it some breakpoints. Click here. Okay, so this we do not have anything right now, and just come here and enter here. So debugger mode is on, and now what you have to do, just reload this once and start here from here. Okay, now it's reloading, and the pointer basically जो फाइल में है, जो बेसिकली जो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है ब्राउजर, सो ये अभी फर्स्ट पेज में यहाँ पे अभी. ठीक है, अभी इसने कुछ देखा नहीं, तो अब इफ यू सी स्कोप में ग्लोबल स्कोप आया हुआ है, एंड ग्लोबल स्कोप ओपन करते हैं तो ए में क्या है, अनडिफाइंड. अभी इसने वैल्यू देखा नहीं है, बस ये एक बार देख लिया क्या क्या है, बस इसने देखा ए है तो उसने मेमोरी दे दिया है, नथिंग एल्स. ओके, सो लेट्स मूव, अभी आगे बढ़ते हैं. सो अभी देखो तो इस लाइन को इसने रन कर दिया, एंड वैल्यू क्यूरीज प्रिंट हो चुका है. देन इस लाइन पे, एंड लेट्स सी क्या होता है, एंड देख लेते हैं यार अभी क्या है. अभी भी अनडिफाइंड, तो प्रिंट क्या होगा, अनडिफाइंड. ओके, सो लेट्स मूव टू दी, अभी यहाँ पे रन हो रहा है, ये देख सकते हो. नो 10, एंड यस आई फॉरगेट टू शो यू, अभी स्कोप में ग्लोबल स्कोप खत्म हो चुका है क्योंकि सारी चीज़ एग्जीक्यूट हो चुके हैं. सो दिस थिंग हैपेंस इन दी ब्राउजर. ओके, दो फेज में एग्जीक्यूट होता है, एंड दोनों ये सही होते हैं.
आई थिंक आप लोग ये समझ चुके हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग लेट कॉन्स्ट और फंक्शन जो है वो खुद से देखो, खुद से ट्राई करो। अच्छा चलो, मैं फंक्शन को शो कर देता हूँ एंड लेट और कॉन्स्ट खुद से करना, क्योंकि मेरा यहाँ तक सारा किया हुआ है। एंड फंक्शन आई थिंक फोर्थ में है या थर्ड में है। ओके, आई थिंक S3 में फंक्शन को मैंने क्रिएट किया था, या फंक्शन को मैंने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ कॉल किया था। एंड लेट्स रन, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो फिर से चलते हैं होस्टिंग पे, S3 फाइल, एंड लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर, एंड लेट्स गो हियर इंटर समथिंग। ओके, डिमोगर मोड ऑन हो चुका है। एंड यस, यहाँ पे रिलोड करने से नहीं होता है, आपको मैनुअली बैक में जाना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे इंटर वेंटर कुछ मार देना। ओके, देन इट विल स्टार्ट। यहाँ पे चलते हैं एंड अभी यहाँ पे एक सेकेंड, अगर अभी देखो तो लोकल, ये तो बाद में देखा जाएगा, स्कोप में मैंने किया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। एंड क्लोजर ये सब मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो अभी देखो, अगर फंक्शन देखो तो ये फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन आ चुका है यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन यहीं पे आ चुका है विदाउट रन। ओके, तो फर्स्ट फेज में पूरा का पूरा फंक्शन ही आ जाता है वहाँ पे। ग्लोबल स्कोप चलो ओपन करते हैं। सो इफ यू सी वी हैव होल फंक्शन हियर, एंड इसी को मैं आपको दिखाऊंगा अनडिफाइंड में, ठीक है। बेसिकली जब मैं एरो फंक्शन, व्हेन वी यूज एरो फंक्शन। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ प्रिंट हो चुका है, एंड इसको खत्म हो चुका है सर, अब कुछ भी नहीं, कॉल स्टैक में भी कुछ भी नहीं है। एंड यस, वी विल आल्सो कवर कॉल स्टैक इन द फर्दर वीडियोस। ओके, लेट्स सी, इसको मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड आई जस्ट यूज वर्ड, यू हैव टू यूज लेट, ठीक है। तो आप लेट करके ट्राई करना, आई विल नॉट गोइंग टू शो एवरीथिंग, उससे प्रैक्टिस करो तो बेहतर होता है। ओके, एंड यू हैव टू रिलोड हियर। ओके, सो कॉल स्टैक में एनोनिमस फंक्शन उस पर भी है, ठीक है। तो कॉल स्टैक तो बाद में देखेंगे हम लोग फ्यूचर में, इन द फ्यूचर मॉड्यूल्स। ओके, सो इफ यू नो, इफ यू सी, ए में क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। अगर इससे कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एरर ही मिलेगा। तो देखो, इसे रन करते हैं, तो जैसे आगे बढ़ा तो एरर मेरा टाइप एरर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये कोई फंक्शन नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कमेंट कर दो, मुझे मोटिवेट करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो अच्छा लगता है यार। ओके बाय, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस, बाय गुडीज।